Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. So, today we will learn the phonic sound. Phonic sound combination of different letters when they become words. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम phonic sound पढ़ेंगे जब बहुत सारे डिफरेंट लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स एक साथ मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं यानी कि शब्द बनते हैं. तो फिर वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका फोनिक साउंड कैसा होता है, वी विल सी इन दिस क्लास. ओके, सो गेट स्टार्टेड. ओके, HIM. The sound of H is H, the sound of I is E, and the sound of M is Ma. Ha, E, M. It will be him. It will be him. HIM, him. Next is SEE. The sound of S is S, and the sound of E is E. Okay? So, the E will be sounded one time only, because if the alphabet comes two times in a single row, then only one time sound will appear. अगर कोई भी अल्फ़ाबेट दो बार आता है एक साथ, उसका एक ही बार साउंड आएगा. इसलिए सा एंड ई विल बिकम सी. SEE, C. Next is NO. And the phonic sound of N is na. The phonic sound of O is O. Na and O will become no. Again, na and O will become no. Then ITS. The phonic sound of I is E. The phonic sound of T is T. And the phonic sound of S is Sa. E, T, S. It will be its. E, T, S. It will be its. The phonic sound of W is W. The phonic sound of H is H, and the phonic sound of O is O. W, H, O. It will be woo. It will be woo. WHO, woo. N, O, W. The phonic sound of N is N. The phonic sound of O is O, and the phonic sound of W is W. Okay, so it will be now. Okay, it will be now. So here W sound will be silent. Now. Okay. MAD. The phonic sound of M is Ma. The phonic sound of A is A. And the phonic sound of D is D. M-A-D. It will be mad. It will be mad. Next is DID. The phonic sound of D is D. The phonic sound of I is E, and the phonic sound of D again is D. D, E, D. It will be did. DID, did. Next is WAY. The sound of W again is W. The sound of A is I, and the sound of Y is Y. So here again the sound of Y has been साइलेंट. जो Y है उसका साउंड कैसा कर दिया है, साइलेंट कर दिया है. सो व एंड ए विल बिकम वे. ओके, WAY, वे. नेक्स्ट इज USE. ओके, सो हियर द साउंड ऑफ U इज U ओनली. यहाँ पे U का साउंड क्या रखा है, U ही रखा है. एंड द साउंड ऑफ S इज स. S का साउंड क्या है, स. एंड E विल बी साइलेंट. E क्या होगा, साइलेंट होगा. तो USC, use. USC, use. USC, use. Very nice. Okay, so THE. How we will pronounce this? The sound of T is T. The sound of H is H, and the sound of E is A. Okay, लेकिन in this word we will pronounce T and H as the. Okay, हम यहाँ पे T and H को कैसे pronounce करेंगे?
द की तरह प्रोनाउंस करेंगे. कैसे वो बोलेंगे? द. और ई विल बी साइलेंट हियर. ई जो है वहाँ यहाँ पर क्या होगा? साइलेंट होगा, मतलब उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी. ओके. समटाइम्स फ्यू अल्फ़ाबेट्स बिकम साइलेंट. कभी कभी कुछ जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं. वो होते हुए भी उनकी साउंड नहीं आती है. ओके. तो सेम हियर, यहाँ पे टी एच का साउंड होगा द एंड ई विल बी साइलेंट. तो हम इसे कैसे बोलेंगे? द. कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे? द. अगेन टी एच ई, द. गुड. Next is OF. Okay, again the sound of O is O and the sound of F is F. When we will combine O and F, it will become off. It will become off. Nice. Next is I and S. Okay, the sound of I is, what is the sound of I? E. And the sound of S is S. Okay. आई का साउंड ई होता है, एस का साउंड स होता है. एंड व्हेन वी विल कंबाइन दिस इट विल बिकम ई स इस. क्या बन जाएगा? ई स इस. गुड. सो आई एस इज. नेक्स्ट इज वाई ओ यू. अगेन द साउंड ऑफ वाई इज य. ओके. ओ इज ओ एंड यू इज आ. ओके. सो हियर अगेन यू इज साइलेंट. यू का जो साउंड है वो साइलेंट है एंड यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगा यू. सो इट विल बी यू. ओके. हम इसे यू प्रोनाउंस करेंगे. यू. वाई ओ यू, यू. नेक्स्ट इज एच एंड ई. अगेन द साउंड ऑफ एच इज ह एंड द साउंड ऑफ ई इज ए. ओके. बट हियर वी विल प्रोनाउंस ई एज ई. हम यहाँ पे ई को कैसे बोलेंगे? इसका ई का साउंड कैसा होगा? ई होगा. तो अगेन ह और ई, ही. इट विल बी ही. नेक्स्ट इज एफ ओ आर. द साउंड ऑफ एफ इज फ. द साउंड ऑफ ओ इज ओ एंड द साउंड ऑफ आर इज, आर का साउंड क्या होगा? र. आर साउंड इज र. सो फ ओ र. ठीक है. हमें इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? फोर. फा पे ओ की मात्रा फोर एंड देन र. फोर. हियर अगेन W sound is V. Okay, how we will read WAS? W sound is V, A sound is A and the S sound is S. Okay, but here we will pronounce A as A. Okay, हम यहाँ पे A को A pronounce करेंगे तो V, A और S क्या हो जाएगा? Was. It will be was. It will be was. WAS, was. Next is O and N. Again the sound of O is O and the sound of N is N. N का sound क्या होता है? न होता है. तो O और न जब हम combine करेंगे, मिलाएंगे तो हो जाएगा on. It will be on. Next is A and D. Okay, the sound of A again is A. The sound of N is N and the sound of D is D. ठीक है. A को हम A pronounce कर रहे हैं, न और ड क्या हो जाएगा? And. It will be an, d, and. Next is T O. So again the sound of T is T. The sound of O is O. तो when we will combine T and O it will be two. यहाँ पे O को हम U pronounce कर रहे हैं, so T और U क्या हो जाएगा? two. So M-I-N-D. How we will pronounce M-I-N-D? Mind. Right? M-I-N-D क्या होगा? Mind. Next is I-T. I-T को हम कैसे pronounce करेंगे? It. I-T is it. आपको मेरे बात बोलना है. I-T is it. Next is L-E-A-R-N. तो हम L-E-A-R-N को कैसे pronounce करेंगे? Learn. Okay. L-E-A-R-N is learn. Good. नेक्स्ट इज M-A-D. तो M-A-D क्या होता है? मैड. ओके, M-A-D इज मैड. गुड. व्हाट इज C-A-N? C-A-N क्या है? कैन. गुड. व्हाट इज C-A-N? कैन.
नेक्स्ट इज CRY. प्रोनाउंस CRY क्या था? क्राई. राइट. CRY, क्राई. नेक्स्ट इज HUT. HUT, व्हाट इज HUT? हट. HUT क्या है? हट. नेक्स्ट इज MUT. व्हाट इज MUT? मड. MUT क्या है? मड. सो LEFT. तो द फोनिक साउंड ऑफ L इज, L का फोनिक साउंड क्या होता है? ल. फोनिक साउंड ऑफ E इज ए. द फोनिक साउंड ऑफ F इज फ. एंड द फोनिक साउंड ऑफ T इज ट. T का फोनिक साउंड क्या होता है? ट. ल ए फ ट. लेफ्ट. क्या हो जाएगा? लेफ्ट. अगेन ल ए फ ट. लेफ्ट. LEFT, लेफ्ट. Okay, one more time. LEFT, left. Good. LEFT, left. Once more. LEFT, left. Okay. LEFT, left. Next is LET. Okay. The sound of L is L. L का sound क्या होता है? L. The sound of E is A. And the sound of T is T. L, A, T. क्या हो जाएगा? Lat. LET, let. Fine. LET, let. Again. LET, let. Nice. LET, let. One more time. LET, let. Good. LET, let. Good. Next is ALONG. So here the phonic sound of A will be A. A को हम क्या बोलेंगे? A. The phonic sound of L is L. The phonic sound of O is O. The phonic sound of N is N. And the phonic sound of G. G का phonic sound क्या होगा? G. A, L, O, N, G. Along. क्या हो जाएगा? Along. So ALONG, along. One more time. ALONG, along. Good. ALONG, along. Good. One more time. ALONG, along. Nice. Next is WHILE. So the phonic sound of WH will be WH. ठीक है? WH का phonic sound क्या हो जाएगा? WH. I को यहाँ पे हम I ले रहे हैं. ठीक है? I. एंड द फोनिक साउंड ऑफ L इज ल. L का फोनिक साउंड है ल. और E यहाँ पे होगा साइलेंट. E कैसा होगा यहाँ पे? साइलेंट. तो व ई ल, वाइल. ठीक है? व आई ल, वाइल. क्या हो जाएगा? वाइल. स्पीक WHILE, वाइल. वेरी गुड. WHILE, वाइल. नाइस. WHILE, वाइल. वन मोर टाइम. WHILE, while. Next is MIGHT. So यहाँ पे क्या होगा? What will happen here? The phonic sound of M is M. Good. M is M. I is E. Okay. And GH will be silent here. GH क्या होंगे यहाँ पे? Silent. And T, T. The phonic sound of T is T. M, E, T. Might. क्या हो जाएगा? Might. तो MIGHT, might. One more time. MIGHT, might. Good. MIGHT, might. Then MIGHT, might. Good. Next is NEXT. So the phonic sound of N here is N. N का phonic sound N होगा. The phonic sound of E is A. Okay. X is X, right? एक buzzing sound था X, वो है X का. T is T. The phonic sound of T is T. N, X, T. Next. क्या हो जाएगा? Next. So NEXT, next. Again. NEXT, next. So NEXT, next. One more time. The sound of NEXT, next. Next is OSOUND. Okay. So the phonic sound of S is sa.
The phonic sound of OU is OW. The phonic sound of N is N. And the phonic sound of D is D. तो क्या हो जाएगा? सा आउ न ड, sound. It will be sound. तो SOUND, sound. One more time. SOUND, sound. Good. SOUND, sound. Very nice. Next is BELOW. Fine. So the phonic sound of B is B. E is E. तो it हो जाएगी ब और E हो जाएगा B. Okay. ब और E क्या हो जाएगा? B. So the phonic sound of B will be B. Then the phonic sound of L is L. The phonic sound of O is O. And the phonic sound of W is W. So W sound will be silent. W का जो sound होगा वो क्या होगा? Silent होगा. तो ल और O क्या हो जाएगा? Low. So LOW, low. ठीक है? LOW, low. So BELOW क्या हो जाएगा? B low. Okay. BELOW will be B low. One more time. BELOW, B low. Good. BELOW, B low. So everyone again, प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. बार बार इसको प्रैक्टिस करो. हर अल्फ़ाबेट को बोलो, फिर उसको कंबाइन करके बोलो. जैसे LEFT, लेफ्ट. ओके. सो दिस विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल. इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है, पढ़ने की क्षमता है, वो इंक्रीज़ होगी. सो डू इट प्रॉपरली एंड सेंड योर ऑडियो मैसेज टू आवर व्हाट्सएप नंबर. आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी और अपना ऑडियो मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए. Hope you had a good class. Have a nice day. Thank you.